Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Today we will be discussing about connective tissues. We had discussed in the previous lecture about tissue. Tissue is a combination of two or more cells which perform a relatively specific function in the body. फिर हमने डिस्कस किए थे कि there are four types of tissues: epithelium or epithelial tissues, skeletal muscular tissue, nervous tissue, and connective tissue. So today we will be discussing about connective tissue in detail. So connective tissue is the most abundant tissue in the body. Body में सबसे abundant tissues in four main types जो अभी हमने डिस्कस किए: epithelium, connective tissue, muscular tissue and nervous tissue. तो इनमें सब में से जो abundant tissue है in the body, that is connective tissue. It is made up of the following cells: fibroblasts, mast cells, fat cells, macrophages and leukocytes. These fibroblast cells, these are responsible for the formation of fibers, collagen fibers. Mast cells are inflammatory cells which are responsible for production of histamines, etc. Fat cells are present in the lipids in the fats. Macrophages are the cells of immune system. They help to fight against infections. Leukocytes, these are white blood cells which are also responsible for fighting against infections and microorganisms. So macrophages and leukocytes, they are responsible for providing immunity to the body. So what are the important functions of connective tissue in our body? So it performs the following important functions in our body. The first one is insulation. Connective tissue is providing insulation to our body. और जैसा कि फैट सेल्स जो है, लिपिड्स, विच इज़ अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, दे आर प्रेजेंट बिलो और स्किन. सो इट इज़ प्रोवाइडिंग इन इंसुलेशन, क्योंकि यूनिवर्स में एवरीथिंग मूव्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टूवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन. सो बॉडी का जो नॉर्मल ह्यूमन टेम्परेचर है, दैट इज़ 36.5 to 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड और 98.4 Fahrenheit. So in summer season, the temperature of the surrounding is greater than the body. So according to law of diffusion, यही टेम्परेचर आउटसाइड से बॉडी में डिफ्यूज़ करेगा, मूव करेगा. लेकिन ये जो इंसुलेशन मटेरियल है, दैट इज़ फैट्स, इट इज़ प्रिवेंटिंग दिस मूवमेंट, दिस डिफ्यूजन ऑफ टेम्परेचर और हीट फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड. इसी तरह सर्दी में बॉडी टेम्परेचर इज़ 37.5 डिग्री सी, लेकिन जो एक्सटर्नल टेम्परेचर होते हैं एटमॉस्फेयर का, डेट इज़ वेरी लो. सो हीट जाएगा फ्रॉम इनसाइड ऑफ द बॉडी टू आउटसाइड. लेकिन इस मूवमेंट को, इस डिफ्यूजन को प्रिवेंट करता है फैट्स. सेकंड इज प्रोटेक्शन. सो इट इज़ आल्सो प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू आवर बॉडी. कनेक्टिव टिश्यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्किन. स्किन में भी कनेक्टिव टिश्यूज है, सो स्किन इज प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन. इसके अलावा बोन्स में है विच आर प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू डेलिकेट ऑर्गन्स. स्टोरेज ऑफ एनर्जी, एनर्जी की जो स्टोरेज है वो भी इन फैट सेल्स में होता है. फोर्थ इज सपोर्ट. सपोर्ट ऑफ द बॉडी इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि स्किन में भी कनेक्टिव टिश्यू है. हमारे बोन्स जो है, दे आर मेड अप ऑफ connective tissues, tendons, ligaments, etc., which are responsible for providing support to the body. Fifth is transport of materials. बॉडी में जितने भी materials का ट्रांसपोर्ट है, मूवमेंट है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, डेट इज बिकॉज ऑफ दिस कनेक्टिव टिश्यू. ब्लड, बेसिकली ब्लड एज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह इन डिटेल कि ब्लड जो है ये कनेक्टिव टिश्यू का एक टाइप है, एंड ब्लड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन आवर बॉडी. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ
connective tissues. So now we will be discussing about types of connective tissues. So basically there are 6 types of connective tissues in our body: loose areolar tissues, connective tissues; dense connective tissue; third, adipose tissues; cartilage, bone, and blood. So we will be discussing one by one in detail. So loose areolar connective tissue, it is present in almost every part of the body. लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, जैसा कि नाम से जाहिर है, दीज आर सेमी सॉलिड. They are present in every part of the body and their main function is connection and support other tissues को, other body structures को support करना, आपस में connect करना. It is the function of loose areolar connective tissue, and as I mentioned, these are semi solid in nature, or these are jelly like, so that's why they are called loose areolar connective tissue. The second type of connective tissue, that is dense connective tissue. These are made up of non-elastic cells. Because they are dense, so the cells will be densely placed and they will be hard as compared to loose areolar connective tissue, which are semi-solid in nature. So dense connective tissue are hard because they contain more collagen fibers. चूँकि dense connective tissue में collagen fibers ज़्यादा होते as compared to loose areolar connective tissue. That is why they are dense. They are made up of non-elastic cells. It has 2 subtypes. One is fibrous tissue and the other is elastic tissue. Fibrous tissues, they are present in ligaments and tendons, as we had discussed in the previous lecture, that ligaments connect two bones together, 2 or more bones together at a joint. जिस तरह नी joint में cruciate ligaments है, anterior ligament है, posterior ligament है, तो they hold the femur with the tibia and fibula. Tendons are responsible for connecting the muscles, anchoring the muscles into the bones. Elastic tissues are present in blood vessels, trachea and bronchi. The third type is adipose tissue. Adipose tissue, they are made up of fat cells. Body में जितने भी fats है, fat cells है, they are basically connective tissues. It has 2 subtypes: brown adipose tissue and white adipose tissue. Brown adipose tissue is present in the children. जैसे जब बच्चे पैदा होते हैं तो most of the adipose tissue, that is brown adipose tissue, which is replaced by white adipose tissue. तो normal adult में जो adipose tissue होगा, that is white adipose tissue. और human में, female में adipose tissues, fat cells are more as compared to male. Female में adipose tissue ज़्यादा होते as compared to male, and they are present in the gluteal region, in the breast, etc. Cartilage, it is the 4th type of connective tissue. It is soft as compared to bone and present at the end of bones. Cartilage, it's also a type of connective tissue which is present between the 2 bones. जैसा कि नी जॉइंट में जिधर 2 bones मिलते हैं तो बीच में cartilage होता है, and the cartilage is responsible for decreasing friction. जैसा कि ओल्ड एज में आर्थराइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, तो एज के साथ साथ ये कार्टिलेज जो है ये ख़त्म हो जाता है, और मोस्ट ऑफ द पेशेंट दे कंप्लेन ऑफ जॉइंट पेन्स, क्योंकि फिर फ्रैक्शन ज़्यादा होता है और उसी की वजह से बोन में पेन होता है, नी में पेन होता है. फिफ्थ इज बोन. बोन इज आल्सो अ टाइप ऑफ connective tissue, and we have discussed in detail in the previous lecture about the bone. इसके स्ट्रक्चर भी हमने पढ़ा है कि it has इसके जो लेयर्स होते हैं, पेरियोस्टियम और वो सारे लेयर्स, कॉम्पैक्ट बोन, कैंसिलस बोन, बोन मेरो, वो स्ट्रक्चर पार्ट्स इसके जो एपिपेसिस, मेटापाइसिस, डायफेसिस,
ईच एंड एवरीथिंग, इसकी कंपोजिशन के इसमें जो ऑर्गेनिक पार्ट होता है, इनऑर्गेनिक पार्ट होता है, ऑल डेट, इसके फंक्शंस, इसके टाइप्स, एवरीथिंग वी हैड डिस्कस्ड इन द previous lecture. In the sixth main type of connective tissue, that is blood, which is responsible for transport of materials. So it's very important from MCQ point of view that blood is a type of connective tissue, and blood हम पढ़ेंगे in detail inshallah in the unit of blood. So blood जो है it has two parts. One is a cellular part and the other is liquid part. The liquid part is known as plasma, which is the liquid part. The blood cell में three types होते हैं: red blood cells, white blood cells and platelets. Red blood cells, white blood cells and platelets. So we will be discussing this in detail in the unit on blood. So this was all about connective tissue, its functions, its composition and its different types. Thank you very much.